ગુજરાતી મિડે .com સાથે આજે છે અનુ અગ્રવાલ. આ નામ 90s છોકરાઓને છોકરીઓએ જે રીતે સાંભળ્યું છે અને એ નામ સાંભળીને એ લોકો મોટા થયા છે, કારણ કે આશિકી ફિલ્મે આપણને એક એવો ચહેરો આપ્યો જે આજ સુધી આપણા હૃદયમાં એઝ ઇટ ઇઝ છે. આજે આપણે એમની સાથે વાત કરીશું કે આજકાલ એ શું કરી રહ્યા છે, શેમાં બિઝી છે અને શું કરવા માંગે છે. Hi, and I'm so excited to be Same talking to here, you. same here. जब ये इंटरव्यू करना है, ये डिस्कशन हो रहा था, so I was remembering those songs and your looks. I remember I was not even You're a teenager. Yeah, I was not even a teenager, but Right. अच्छा ये फ्रॉक ऐसा स्टिच हमें भी करवाना है, you know. So you were a trendsetter. If we talk about your life, you have gone through lots of ups and downs. हम उन सब के बारे में फिर से आपसे पूछना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो कहानी आप कई बार बता चुकी हैं, बट मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि what makes you stand tall even today? What is that magic, Anu? You know, this tall, तो मतलब मैं हुई tall. So whether I like it or not, Philosophically, I I'm cannot stand asking. short. मैं तो हमेशा लंबी ही खड़ी होगी. You know, in fact, I had written a poem which said that I'm all in a straight line. And फिर मैंने सारे, you know, my hair is straight, my, you know, so all of the things, you know, my spine is straight, all the things I had, legs are straight, everything that is straight in me. You know, I really believe that faith, you know, अपने को छोटा समझना, अपने को बहुत कि मैं ये हूँ, क्योंकि जब आप इतना अचीवमेंट करते हैं और आपके लोग इतने आपके बारे में पागल हो जाते हैं, तो इट्स वेरी इजी टू गेट एन ईगो, यू नो, दैट वैनिटी कि मैं भी कुछ हूँ. एंड वन ऑफ द थिंग्स राइट फ्रॉम स्टार्ट आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे हमेशा ये लगता था कि मैं लोगों के साथ में एक ही हूँ, मैं कोई उनसे अलग कोई बहुत बड़ी या चीज़ नहीं हूँ. आई एम अ नॉर्मल पर्सन. And to have faith in the super soul, God, कि जो कुछ हो रहा है वो उनकी दुआ से हो रहा है. मैं अपनी तरफ से जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँगी, but at the end of the day, the decision if I succeed or not, मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी, it's all his. And I think that faith has kept me going through all the ups and downs in my life. Were you like this पहले से, या बिकॉज एडवर्सिटीज आती है जब हमारे लाइफ में तो हमारा फेथ बढ़ता जाता है, यू नो, राइट? हाँ, नहीं. What happened, you know, in that matter with you? No, so the thing is that again, you know, little is known about my background, because my parents are not here. I was always living alone. But इसलिए लोगों को ये पता नहीं है कि मेरी जो फैमिली है बहुत एक्सट्रीम में स्पिरिचुअल है. And when I say spiritual, I don't mean religious, कि मंदिर जाना या मस्जिद जाना या चर्च जाना और praying to God. No. When I say spiritual, I'm talking about being humanitarian. कि हमारे पास है और हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं. And that in my family, since I've grown up with this, like even my father who started his life with the Air Force, तो वो उसके बाद में इकोनॉमिस्ट बन गए थे, बट यू नो वो तो एयर फोर्स तो उनमें ऐसी जड़ कर गई थी, तो हमको बचपन से वो हम ये कहते थे कि ये मत देखो कि तुमको क्या चाहिए, ये देखो कि दूसरों पे क्या चाहिए और तुम क्या दे सकते हो उन्हें. माई एंटायर अपब्रिंगिंग इज कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों के बारे में सोचो. यू गॉट इनफ. What do you mean you don't have enough? You've got food, you've got two meals a day. That's enough. उससे ज़्यादा क्या चाहिए तुमको? छत है तुम्हारे पास सोने के लिए, लोगों के पास इतना भी नहीं है. The beginning I used to just feel कि I am fine और जो मुझे मिल रहा है वो बहुत है. And be thankful, be grateful, और दूसरों के लिए जिनके पास नहीं है, उनके लिए जो नीडी हैं, उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये मेरे अंदर हमेशा ख्याल रहा है. समवन जिसके मन में ये एक यू नो भाव रहता है कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकती हूँ, ऐसी एक शख्सियत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आती है, ग्लैमर वर्ल्ड में आती है. मॉडलिंग से आपने शुरू किया था, एंड वी ऑल नो, यू नो, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड, बट वी ऑल्सो नो द डार्क साइड.
So the kind of people that you met, people who you remember because they were really good to you, some incidents that really shook you because आप जब आई तब you were very young, तो भले आपके मन में अच्छाई का भाव होता है लेकिन आपके साथ कुछ गलत होता है तो एक for a millisecond also it will hurt you कि why really. तो ऐसी कुछ बातें some really good memories, precious memories which you can share, and some incidences maybe you would want to share. The thing is कि one of the things I realized very early, and that's what actually kept me going ahead and going forward, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत मुश्किल थी और जैसे कि मेरी मम्मी कहती थी कि तुमने तो अपनी लाइफ इतनी मुश्किल बना ली है, क्यों? तुम लड़के खड़े हुए हैं शादी करने के लिए, तुम 16 साल की थी तब से रिश्ते आ रहे हैं, पर तुम ये कहती थी कि नहीं मैं तो, पर तुम पढ़ाई में इतनी तुम टॉपर थी तो हमने भी कहा चलो पढ़ाई करने दो लड़की को, तो तुम पढ़ाई करती गई और उसके बाद तुम बोली कि मैं तो इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। तो हम लोग क्या कहते तुमसे? What we could do is support you, and I'm so grateful that I have understanding and supportive parents. Because 30 years ago, parents, a girl saying that I want to live alone and be independent, parents तो घर में उसको पकड़ के घर ले आते थे पापा। मेरी एक आध फ्रेंड्स के साथ हुआ, वो दिल्ली से बम्बई आ गई फ्लाइट लेके कि now I'll be on my own, get a job. Father came within a week and took the daughter back. So that didn't happen with me, and I'm just again grateful that I had parents who were supportive. And on the same hand, I also realized that life is difficult and everybody is not good to you, because when you're a girl and wherever you go you just attract attention. Like I don't, it's not like I'm trying to be attractive, or I walk in and say कि मेरी तरफ देखो, उल्टा होता था, मैं कहती कि मैं घुसूंगी तो लोग देखना मेरी तरफ क्यों कर देंगे. And this has been happening since I was a kid. So I just had no choice. I just used to draw attention, and when you're drawing attention, all kinds of energies come to you. Yeah. तो बहुत ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, और jealousy is something जो मैंने बचपन से डील करी है from women. When my mother says कि तुम 3 साल की थी तो मैंने तुमको अच्छी फ्रॉक पहना के किसी पार्टी में मैं लेके गई, कहती तुम वहाँ चल के वहाँ तो तुम मॉडल की तरह कैसे वॉक करने लगी. मैंने कहा ये कौन है, क्या कर रही है. वहाँ जाके कैमरा के सामने पोज करना शुरू कर दिया, वहाँ कैमरा जो खड़े हुए थे, और जाके अंकल की लैप में जाके बैठ गई. वो आंटी जो है वो परेशान हो गई कि तुम कर, ये लड़की कहती मैंने तुम बचपन से तुम्हारी जेलसी देखी है. लेडीज हु वर, the auntie was 40 and you were 3. She says, but with the attraction that you drew, a lot of insecurity and jealousy has been coming, and that's something that I faced all my life. And it became really difficult when I became Especially after Ashiki, क्योंकि उसके बाद तो मतलब कि flood हो गया. So of course there are a lot of people who were who were totally in admiration and totally, but a lot of people who were in admiration were also jealous also. A lot of girls कि ऐसी life कैसे हो सकती है. Nobody understands कि तुम्हारे अंदर, they don't know the backstory. They don't know what is happening behind the closed doors. What difficulties you are facing. So I think that early on in 1991, I'm so again grateful that I was taken to do Vipassana by, in fact, a Spanish flamenco dancer who was here. Yeah, my life is so dramatic. Wow. I don't have a choice in that. So she took me to do Vipassana. She said, "ये 10 दिन का course है." Now, one of the things, and that was the time when Ashiki just released, and it was just, I was flooded with the paparazzi, with and I was living alone. So it, घर लोग मेरे घर के बाहर खड़े, and I was in my early 20s, no. So I had no idea कि how to tackle with this, क्या करूँ. And I went and did Vipassana, and उसमें एक चीज़ मैंने ये सीखी कि just let go, meditate, calm your mind, and just let go, and wish everyone well. So I think that is something that has really, really, really. अब मैं आपको बताऊंगी कितनी सारी जो चीज़ें हुई, and I just don't it's not my hobby to talk about the bad things that happen in my life, and the good things are there for everyone to see. So there's nothing to talk about really. I think I really like the idea of living
in the now कि आज इस समय मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या, मेरे अंदर क्या विचार आ रहे हैं, मैं कहाँ बैठी हूँ. And so I think that's a marvelous practice क्योंकि उससे दिमाग इतना शांत हो जाता है. So getting into the past and is not a hobby at all. पर हाँ, कुछ चीज़ें मैं सीखी हैं मैंने जो, because it's the lessons learned which dealing you with have people. to learn Yeah. and be again grateful that you were taught those lessons. Like, thank your enemies, thank the people who pushed you out of glamour, or that whole thing that happened at that time, that madness. People were not doing it, but with that excessive fame that I was getting, जो मेरे लिए तो मतलब कि ये हालत आ गई थी कि मतलब मैं कैसे घर से बाहर नहीं निकल सकती हूँ. आपकी गाड़ी ब्लैक कलर के विंडोज लगानी पड़ रही हैं बिकॉज ट्रैफिक जैम्स हो जाते हैं, और उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा, लोग मेरी गाड़ी पहचानते थे. तो गाड़ी अगर कहीं जाके खड़ी हुई ट्रैफिक सिग्नल पे, ट्रैफिक जैम्स, people running to my car, leaving their car in the traffic jam, hundreds and thousands of people banging my car door. I mean, it's just like created fear, and I just started to get scared because, and I was, like my mother says, you're a fearless child. मतलब मुंबई आके अकेले रहना, इससे ज़्यादा fearless उस 30 साल पहले क्या हो सकता है, right? So I was totally fearless कि I can tackle it. But stardom, wow, with that fame was so difficult to tackle. Like I couldn't tackle it. And I just said, okay, I'll take a break, and I never moved it. I mean, you actually chose to leave the film industry when you were right on top, Yeah. And, I was just going to ask you that maybe you were one of the very first actresses, with a dusky skin tone. आज हम लोग body positivity and color and this and that, ये सब social media की वजह से बहुत सारी बातें करते हैं. तब तो उस जमाने में approach बहुत अलग था. Right. मतलब न्यूज़पेपर की ad में आज भी आता है, but वही लंबी गोरी convent educated, but वो जो आपने एक glass ceiling break की थी, and then just leaving everything, was it just the fame जिसकी वजह से you decided कि बस नहीं करना है? I think that I can give you so many reasons, because, कि ये था, ये नहीं था, I can, because those reasons are being made by the mind, but I have gone beyond the mind, and I understand today that, हर चीज़ का एक cycle होता है. Origin, management and destruction. Generation, organization, destruction is what God is. ब्रह्मा विष्णु महेश. जो चीज़ जब वो पैदा होती है, तो ये तो पूरा यूनिवर्स जो है वो सर्कल में घूम रहा है. पैदा मौत. That's happening at cellular level. So the thing is that I achieved everything, possibly because लोगों को टाइम लगता है चीज़ें अचीव करने में. It's not like कि आशिकी हिट हो गई, that's achievement, वो enough हो गया. नहीं. When I say that, I mean the contentment that is there karmically in you, कि ये मुझे और चाहिए. जब तक आपकी वो आपके अंदर है कि मुझे चाहिए, वो एक नीड जो कि वो एक आपको वो डिजायर है कि कितना भी मिल जाए, नहीं मुझे और चाहिए, तब तक आपका वो सर्कल पूरा नहीं हुआ है. बट फॉर मी, आई हैड रीच माई जेनिथ, बिकॉज मैंने पिछले जन्मों में बहुत अचीव कर लिया है. मुझे इस जन्म में ना मुझे कभी बहुत, वाकई में कहूँ तो ऐसा नहीं था कि मैं अपनी फैमिली करूँगी, बच्चे करूँगी. क्लास में लड़कियां बातें करती थी जब हमारे कॉन्वेंट स्कूल में. never even craved It for was never love. there. चलो फैमिली या बच्चे नहीं, था ही नहीं. Not even love. बचपन से नहीं है. And I used to think कि ये. So it's like what is wrong with me? You understand, like, because a monk who became a model, huh? Exactly. तो बचपन से मैं देखती थी लड़कियों को कि they used to desire कि I want to have a baby. Literally, when we got our periods, 10-11 साल की लड़की, जहाँ ये होता था, that feeling, the motherhood की feeling immediately आती है लड़कियों में. And I used to think कि यार ये मेरे में क्यों नहीं आ रही है. I used to listen to all the girls, but I used to keep quiet because I was like, I don't know, something is not right. समय मुझे I could not understand. But then as I started to grow up, I said, okay, and then I nearly got married also with my first boyfriend. But then it didn't work out. Somehow it just didn't happen. जैसे कि होना ही नहीं था. अभी भी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है. क्या तो किसी भी समय हो सकता है. Anything can happen. But the thing is that what I'm trying to tell you is कि जो आप कह रही थी कि भाई आपने जो है कैसे ज़ेनिथ पे छोड़ दिया, और मेरे जीवन का जो चक्र चल रहा है वो मुझसे बड़ी एक सत्ता है जो चला रहा है. And I have accepted it and I have understood it and I move on with life. वो कहते हैं कि आप if you throw a leaf in the water, it just moves with the water. And as the water goes, तो जैसा पानी जाएगा ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, लेफ्ट होगी, राइट होगी. Go with the flow. Yeah. And I Doesn't try to be swim. like a leaf. Be like a leaf. And that's the most beautiful way and the most beautiful my sadhana. अगर कोई spiritual साधना है तो be like a leaf है. कि without accepting just जहाँ पानी आपको लेके जा रहा है जीवन का, उसके साथ आप चलें. Without complaining, without asking for more, कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. अगर आप ये कहना शुरू करते हैं तो आप अगर पत्ता है तो वो पत्ता रुक जाएगा कि नहीं अब मुझे यहाँ रुक के ये अचीव करना है यहाँ पे. तो पत्ता अगर पानी की धारा के साथ चलना ज़रूरी है तो उसके साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो हैं अपनी. तो आई थिंक दैट इन दिस लाइफ That's what yeah, was so destined for. and you know I think that even I think I'm just we are playing a role. हम लोग लाइफ को इतनी सीरियसली लेते हैं, बट एक्चुअली फिल्म देखते हैं तो उसमें लोग मर रहे हैं या हंस रहे हैं या रो रहे हैं, तो हम भी उनके साथ रो हंस सकते हैं, पर हम घर आते हैं तो हम भूल जाते हैं. आई थिंक साक्षी भाव, दैट्स द वे लाइफ इज. साक्षी भाव. सो वो साक्षी भाव जो है उसके साथ अगर हम जीवन को देखें तो, बट it's not easy. It's a practice. And what keeps you busy nowadays? Do you want to work again or not really? What is it that's so I'll tell you're you looking something. for? So I'll tell you again, because I am connected with nature. Yeah. And I've always been connected with nature. First of all, my decision to act in a film, तो वो मेरा जो डिसीजन था वो मैं एक्ट नहीं करना चाहती थी बॉलीवुड में फॉर माई ओन रीजन. आई डिडंट वांट टू एक्ट एंड आई वाज गोइंग टू पेरिस. वहाँ मेरा सब सेटअप था, क्योंकि बिकॉज आई हैड टू एक्ट, आई हैड टू एंटर बॉलीवुड. तो उस समय ऐसा हुआ कि I heard and I saw certain visions and which are difficult to explain, क्योंकि वो लोगों को समझ कितनी आएंगी पता नहीं मुझे. And which said कि just do it. You received signs. Just do the Simple. film. Just do it. Yeah. Just do it. अच्छा तो just do it करो, चलो ये कर लेंगे पिक्चर फिर चले जाएंगे. That was my idea. I didn't think that I was going to stay. But I love acting. You understand? See, so how it is, how I have always been an actor. So how I have been placed in this position. जब मैं नहीं करना चाहती, but in any case वो गुण तो है ही आपके पास. तो अगर आपको वहाँ रख दिया, अगर करवाएंगे आपसे तो आप करेंगे. और आप पूरी I love the camera. I can be with the camera. I don't feel closer to anything else or anybody else that I do to the camera. Camera is, I have written it in my book. It was camera is my first love. So anyhow, this had to happen. Chalo, ho gaya. Today, when I look back, I think that it was because it was a transition point for so many things in India that was coming at that time. I was just the threshold of that change. क्योंकि उस समय अब आप देखिए आशिकी ने नया तरीका हर चीज का, चाहे वो म्यूजिक हो, उस तरीके का म्यूजिक नहीं था उससे पहले. सबसे बड़ी चीज उस तरीके के हीरो हीरोइन नहीं थे, जैसे हमने कपड़े पहने, जैसे हम लोग थे, हमारे जो हेयर कट्स थे. डिवोर्स, दैट वाज द फर्स्ट थिंग टाइम यू लिटरली दैट यू सॉ दैट कि हीरो के पेरेंट्स डिवोर्स हो गए और फादर ने दूसरी शादी कर ली. गर्ल हु वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट. मेरी 5 लाइनें हैं पूरी पिक्चर में. उसमें से एक ये है कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ. So I think that I was just placed at that point there, and then I had to get on with my spiritual development, because basically that's my start, that's my beginning. And जब achievement हो गया, last उससे बड़ा achievement क्या हो सकता है उस समय, जब कांस में पिक्चर रिलीज हो गई 1995 में. I mean, there cannot be a bigger achievement than that. And I also got an offer from talent management agency in Los Angeles. And it was like the 3rd largest agency in Los Angeles at the time. So I could have done films there.
बट वो मेरा दिमाग कॉलिंग ही नहीं था आपका। ठन हो गया, कॉलिंग हो गई मेरी कि यार नहीं, अपने को जानना है मैं कौन हूँ, कि मैं ये जो देख रही हूँ, जो मेरे बारे में लिखा जाता है, जो मेरी फोटोएं छाप के प्रेस लिखती है, मैं वो तो नहीं हूँ, मैं कौन हूँ। So I mean, I today want to thank the press that whatever was written about me at the time pushed me to a higher spiritual realm. So I mean, it's just a circle of life. सब लोगों की मेरी लाइफ तो मुझे लगता है कि क्योंकि मैंने शुरू से सरेंडर करा हुआ है. I don't have too many desires. I just accept कि होता है कि I love coffee. You know that. Yeah, of course. उसका डिजायर होता है. Wow. So then I look at it, तो ये डिजायर है. So Anu, I would like to ask you that जब आपने काम किया फिल्म इंडस्ट्री में, ग्लैमर इंडस्ट्री में, तब क्या आपके जो कनेक्शंस थे उसमें से कुछ दोस्त आज भी आपके साथ कांटेक्ट में हैं या नॉट रियली, और तब काम किया और आज आप जो देख रही हैं इंडस्ट्री, उसमें क्या चेंजेस आपको बेहद पसंद है और कुछ चीज़ें जो है आपको बहुत ही ऑफ पुटिंग लगती हैं? वाकई में उस समय तो मुझे सबसे ज़्यादा ऑफ पुटिंग चीज़ तो और मुझे बहुत मुश्किल होती थी कि सारा ऑल मनी विल बी इन ब्लैक, right? Because my father is an economist and he's a serious guy, so the thing is I am raised like that, right? Yeah. So I used to be कि नहीं, आप मुझे वाइट में पैसा दें तो आप चेक दें, ये मैं कैश कहाँ रखूँगी. So the thing is that was one of the big things that I had, I just felt To so deal with uncomfortable. it, yeah. So uncomfortable with the thing. But luckily what happened is that whatever the cash came went into paying I was in a Rented place, yeah. I was in a rental. So I started, and that that guy was an MLA. So he used to just come and randomly start asking me for money. कि वो अनु मुझे पैसे की ज़रूरत है, पैसे इतने चाहिए, 5 लाख. And somehow or the other, some producer has given me some cash. Some amount, yeah. So I started giving him the cash. Okay. And within 2 years, I had bought the house, by default. Yeah. So the thing is that that was one of the things that made me extremely uncomfortable. Second thing at that time that made me uncomfortable was women's portrayal. कि औरत जो है, मतलब कि आप कैसे दिखा रहे हैं औरतों को, ये ना उनका दिमाग है, तो सिर्फ शरीर और उनका डांस करना और थोड़े झटके इधर से लेफ्ट से राइट से करना, और I mean women are mothers, women की women are so deep subjects. आप उनको कहाँ रिड्यूस करके आपने क्या कर दिया है उनका. मुझे इससे बहुत, that's one of the reasons मैं फिल्मों में काम ही नहीं करना चाहती थी. बट आशिकी was a different girl who was independent, और मेरे जैसा काफ़ी रोल मेरी रियल लाइफ से मिलता था. So that was another thing that I was discomforting. And the third thing was, of course, India was so far away from the international realm at that time completely. I was working a lot abroad, because I started in 3 years before Ashiki. I started modeling abroad, and I did London, Paris, New York, and I stayed on there. And तो क्या था कि यहाँ पे मैं वापस आती थी तो मुझे लगता था कि फैशन समझ में ही नहीं आता है. हमारे भारत में हर गांव में फैशन है. I mean, look at like you go to like Rajasthan, you go to Gujarat, the colors, the textures, the combinations, the blouses, the cholis, I mean, it's incredible. The West does not know. We cultivate our own fashion. We cultivate our own crop. We cultivate our own food. Yeah. हर जगह का खाना अलग है. And one is better than the other. So, I mean, I just used to feel कि, we are not being Indians. Why are we not using what we have, our own culture, which is so rich. And then slowly when I went to the spirituality, then I started understanding that the spiritual culture India has. Again, it's oh God, yeah. इस भूमि में सब कुछ शुरुआत हुई है. ये जो भारत की भूमि है, जरा सा देश है हमारा, पर यहाँ की जो धरती है, यहाँ एक एक कण धरती का, इसके अंदर स्पिरिचुअलिटी छुपी हुई है. तो आज मैं देखती हूँ कि आज जितने लोग हैं, लोग जो हैं, लोग कुछ भी कर रहे हो, कैसे भी हों, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, पुअर, कुछ नहीं फर्क पड़ता.
Anybody who is born in India, वो इस धरती में जो पैदा हुआ है ना, वो ऑलरेडी स्पिरिचुअल है, वो ऑलरेडी योगा जानता है, वो ऑलरेडी ये सब चीजें, वो नेचुरोपैथी, वो सब चीजें जानता है, ये सब नेचुरल जितने एलिमेंट्स हैं, everything right here. but we have forgotten it. Yeah. You know, I was doing conferences abroad, and you know, I've been doing for my foundation. Yeah, the last, I was so about to ask you 2000 about to the foundation. 2014. What happened is that, you know, I was healing with my own. I built up my own natural way of healing because I had decided कि मैं chemical तो बिल्कुल नहीं करूँगी, ना मैंने कोई दवाई ली है जब से मैंने hospital छोड़ा है. So I have, you know, so I cook. I studied a lot of, like, you know, what are the herbs one should eat. You know, इस चीज़ के लिए क्या ठीक है, ये सब मैंने बहुत पढ़ाई करी. I like it also. So also, you know, it's a hobby. Cooking is a hobby, and you know, it's nice. जब मेरी healing शुरू हुई तो मैंने इनको बच्चों को देखा. मेरे को देख के उनके, तो मैं तो मतलब I felt so sad. वो बैठे हुए, उनके लिए ये underprivileged हैं, slum के बच्चे हैं, कोई NGO उनके लिए उनको पढ़ाई करा रही है, एजुकेशन देती है उनको. 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास होती है उनकी किसी यहाँ पे, you know, in the barracks of one of the churches here, जगह दे रखी है उन्होंने. But these kids are so, like, you know, ऐसे टेढ़े मेढ़े, you know, आँखें कहीं, मतलब पीली आँखें, मतलब I was just, and you know, ये 8, 10, 12, 14, 16 साल के बच्चे, ये हाल. So I just said कि नहीं, इनके लिए तो I have to do something. And you started that foundation. And that's how my Anufan Yoga started, which I made. And then धीरे धीरे 4 साल के अंदर I did about, you know, reached about 2 lakh kids, and then their mothers, because the mothers, of course, it comes from the mothers. and then the foundation came in 2017. But the thing is that life, Joanna, at the end of the day, it's all about who you are inside you. और हम अपने से इतना दूर हो गए हैं, हमारी सारी दृष्टि बाहर की तरफ है. वो क्या कर रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मैं पहुँच जाऊँ, ऐसा मुझे अचीव कर. इट्स ऑल एक्सटर्नल. पर हमारे अंदर जो कहते हैं कि the gold of life, if there is any, it is inside the human being. Yeah. So I really want to, you know, and I found that. And now my entire idea is कि यार अब मैं चुप तो बैठ नहीं सकती, मुझे सब तक पहुंचाना है, ये सब लोगों को जागरूक करना है कि ये इस तरीके से. You can see that especially after COVID, stress levels and things are not so good at all. But mental health is a huge issue. And दिन पे दिन और बदतर होता जा रहा है. You know, so I feel कि so I'm you know, I'm trained in it, and I am educated in it, and I'm so glad and grateful that the last 20 years, like I lived as a monk, just to understand how to serve people, to understand how the mind works. And ये सब वेदों में हमारे सब कुछ है. हमें कोई आज को जो है वेस्टर्न साइंस की ज़रूरत नहीं है. वेस्टर्न साइंस 300 साल पुरानी है, हमारी वेदा तो 10,000 साल से ज़्यादा पुराने हैं. Are you in touch with people, you know, industry friends? You know, the thing is, I'll tell you, my life has moved so fast. मेरा फ़ोन नंबर चेंज हो जाता है. Suddenly I'm here, suddenly I'm not here, suddenly I'm in Mumbai, suddenly I'm in, you know, Uttarakhand, suddenly I'm in, you know, New York, suddenly I'm in Kutch, Gujarat, suddenly I'm, you know, Kutch, Gujarat, I ran a meditation center. So, you know, the thing is that how can anybody cope with my changes? I only can't cope. कोई नहीं, you know, so it's being fast paced, you know, so and the changes are dramatically different. आप एक ही फील्ड में मूव कर रहे हो तो समझ में आता है. Okay. तो मतलब कि jumping from social work to modeling, then to films, then to, you know, sannyas, to, I mean, like कि there's no Quite dramatic. Yeah, totally dramatic. So what do you want to do? You know, yes, you did tell me कि spiritually आप क्या क्या करना चाहती हैं. So yeah, else? no, that's interesting that you should ask me, because I think that again, like I'll come back to that principle कि live in the now वाली जो principle है. तो हम इस समय क्या कर रहे हैं, हम इस समय क्या विचार एंड कर भी नहीं रहे उससे ज़्यादा कि आपके मन में हो रहा है, मन में विचार क्या है. You know, are you thinking well of people? Are you thinking ill of people? उससे क्या होता है कि सारे your entire cosmos starts to change according to your own thoughts, and we start to attract and make our own destiny. So this I found this is a very serious topic. We'll talk about it another time. Yeah, of course. Of course. But yeah, but
But the thing is that I think that like I was telling you before कि decisions मेरी life में जो the serious decisions कि like serious movements for instance Changes, हाँ, they have just like मुझे कोई आवाज़ सुनाई पड़ गई या कोई symbol आ गया या something so I like doing films like signing आशिकी like leaving because I woke up one morning and I couldn't तो मेरे साथ ये हुआ कि एक दिन मैं सुबह उठी और मैंने देखा कि मैं बर्लिन में रहती थी और वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े कौवे वो सब जो है काऊ 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 कर रहे हैं it's just so they are all coming and they are so I couldn't see the top floor. I was on the 5th floor and it was a 12-story building और वो सारे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं. मैंने यूँ देखा उनको खिड़की से वो सब जाके ना छत पे जा रहे हैं और तब काऊ 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 and somehow it made me feel that something is not right. And then I suddenly, next thing, your life is not right. And I'm talking, this happened in 93 or 4, okay? And then tick, 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 one. It was such quick movement in my mind. मैं जाके खिड़की पे खड़ी हुई, मैंने नीचे देखा, मुझे गाड़ियाँ दिखाई पड़ी. एकदम से आए, कितने तुम्हारे एम्प्लॉइज हैं? 8 लोग अभी आने वाले हैं. You are supposed to go for shooting. फिर, how old are you? You live alone. You have so many people. You have so many cars. Who are you? अच्छा, फिर tick, 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 tick. And then what? So, and then suddenly it came to me that it's never enough. तुम कितना भी तुमको पैसा मिल जाए, तुमको कितनी भी फेम मिल जाए, कभी भी वो enough नहीं होने वाला है. And then I suddenly said, that's where the full stop. That's not enough. Okay. And suddenly इस तरह के कई विचार आए and I said I don't want to go to shoot. And this came to my mind. I said, yeah, that's so odd because I am like, if I'm going for a shooting, I'm totally fully excited. Driver नहीं आए तो I'll just take my car and start driving कि time पे पहुंचना है, I learned driving like that. I didn't know to drive, but मैं set पे अपने को लेके गई हूँ गाड़ी से, उस तरीके से मैंने गाड़ी सीखी. Then it came, then वहाँ पे ये शुरू हुआ कि मुझे पैसा नहीं कमाना है. मुझे ऐसी वो हो गई कि आप मुझे पैसा दिखाइए मत ना, मैं नहीं देखूंगी, मुझे पैसा नहीं, मैं नहीं लूंगी. Nothing which is more than your need. Yeah, it just became like I just didn't want to earn. Nothing more than necessity. Yeah, I just there was something else. I wanted to know something about me. There was like this inner search that started. आप खुद को मिल पाए? हाँ, या अभी भी रोज मिल रहे हो थोड़ा थोड़ा? नहीं मिल पाए तो वो तो एक्सीडेंट से मिलना सब हो गया ना. Because वो तो सारा शरीर जब टूट गया तो फिर आत्मा ही बची. So I think that that's what happened एक्सीडेंट के साथ. क्योंकि उससे पहले मैं काफी कुछ अपने से मिल रही थी. बिकॉज मैं योगा में थी, मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में रह रही थी, वहाँ मैं कर्म योग कर रही थी और मैं ऑलरेडी मैंने स्टार्ट कर दिया था इन 97 98 आई स्टार्टेड द मूवमेंट गिव बैक टू सोसाइटी ने तुमको इतना दिया है, तुम कैसे हाउ आर यू गोइंग टू गिव बैक. तो मैंने एक्सीडेंट के बाद आप और स्पिरिचुअल हो गए. हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ because you saw because that's what showed lights, the light. Yeah, severe pain and severe breakdown of the body and mind and everything, but the good thing was that it just showed me, it just removed all the garbage जो दिमाग में आदमी के इकट्ठा हो जाता है. आइटम सारे अलग हुए, फिर से जुड़े और एक नई अनु. It's a new birth, literally. Yeah. So the thing is that I think that now I was not living in a city over 14 years, 18 years now. And so this whole thing started कि तुम शहर में जाओ, क्योंकि अब तुमको ये सब चीजें जब पता चल गई हैं, तुमने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, वो सर्वाइवल भी इजी हो जाता है ना. अब तुम जाओ और लोगों को बताओ. That's what you aim. ये तुम्हारा मिशन है. तुमको दूसरा जीवन इसलिए मिला है क्योंकि तुम मर जाती हो. क्योंकि the way I was, like doctors say I'm a miracle. There's no way I would have survived. So this entire process now is sketcha. And then again, so I started my foundation, उसमें मैं काम कर रही हूँ. Somewhere from inside me, literally this January, कुछ और आवाज आई, तुम्हारा real profession तो क्या है? You started out as a model. Whatever you are today is because of this. इसको तुम नकार रही हो इतने सालों से, तो ठीक है, तुमने नकारा, उस समय उसकी वो जरूरत थी और उस समय तुमको वो आवाज नहीं आई थी, अब ये आवाज आ गई है. अब get back into your profession.
And तुम जो कर रही हो वहाँ करो ना, करती रहो, उसमें क्या So you're कौन मना कर रहा है? seriously thinking about it. Right? Nobody is saying that you go there then you so carry it on. You want to spread the light, get there. Do I think glamour industry में ज़्यादा light की ज़रूरत है. And you know the other thing, I'll tell you another thing. I'm working a lot with the youth in the last few years, and I started realizing that the younger generation today. I mean, I connect a lot with them because because I think my mind and my brain has got washed out and become it reborn young. But more than that, I feel that there's so much I need to tell them because they are like somewhere they're looking for guidance, and there's this whole flux of this to west or east का जो अब चल रहा है. So I think like the balance कहीं पे वो tip off हो रहा है. So I feel that there's some good energies are needed to come and start saying that look I mean ठीक है, follow the West. Learn the amazing managerial skills or whatever else, etc etc. But don't lose your Indianness because this is तुम्हारा सारा खजाना तो यहाँ है, यहीं पर है. True. तो इसको तो नहीं छोड़ना है. And I think that and then there is so much experience. I think it's time, yeah. And वो आवाज आ गई कि time to share it. And so if I'm in the entertainment business, then of course I'm a model, I'm an actor, I may produce a film. I don't know. Right now I'm not. Don't know. Who knows? What kind of project you would want to do? आप देखती हैं टीवी पे, OTT पे भी बहुत कुछ आ रहा है. So I mean, okay. So if I'm in the film business, let's look into my past. I have always been very, 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 very choosy. Yes. Because after Ashiki, I could have signed hundreds of films, right? Yeah. But I only signed 4 films. I have always had this thing कि what I am doing is for the good of the people at large. It's not about कि मैं अपने को दिखाना चाहती हूँ कि मैं इतनी अच्छी एक्टर हूँ और मैं इतनी बड़ी हिट बन जाऊंगी. नहीं, it's not about that. It's about what can I give to the people there. What can I present which could be beneficial to them in their lives. When I did Ashiki, मुझे ये लगता था कि लड़कियों को ये पता चले कि यार तुमको क्या ज़रूरत है. You don't. And at that time, girls were not thinking like this. You can be independent. You don't need to depend on a guy. You can have a man for, or you can have a lover, you can have a husband, a partner, whatever, वो अलग है. But तुम्हारी अपनी सत्ता एक औरत की तरीके से तुम उसको establish कर सकती हो. तो तुम उसको क्यों नहीं कर रही हो? So that was the thing. And today I feel that, who knows, now there are a lot of platforms, women-centric films are there. There are a lot of platforms in OTT and etc. Who knows what will come up? I don't know. But you are open to doing some totally interesting open. I have always been an open person. Wow. And now that I'm open here, I'm fully open. Lovely. That's lovely to know. We would like to see you on screen for sure. Yeah, of course. I would love to. Yeah. And all the best for Thank your you so much. amazing spiritual, glamorous journey. Thank you. Thank you. Thanks a lot.